The phase of meiotic division in which homologous chromosomes start to move towards the opposite poles is मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल से हमने आइडेंटिफाई किया एनाफेज, होमोलोगस क्रोमोसोम से हमने आइडेंटिफाई किया 1। दैट्स वाई गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज एनाफेज 1, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1? एज यू नो, प्रोफेस 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से डिस्टिंक्ट जेनेटिक मेकअप इज शॉर्टलिस्टेड और हमसे रिजल्ट पूछा गया है मियोसिस 1 का, तो 2 डॉटर सेल्स होंगे, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी, दैट इज 2 डॉटर सेल्स विद डिस्टिंक्ट जेनेटिक मेकअप। अगर हमसे पूछा गया होता मियोसिस 2 का रिजल्ट तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होता। अगर हमसे माइटोसिस का रिजल्ट पूछा गया होता तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होता। हमसे मियोसिस 1 का रिजल्ट पूछा गया था, दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 डॉटर सेल्स विद डिस्टिंक्ट जेनेटिक मेकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बायोलॉजिस्ट treated a cell with a certain type of chemical that inhibited the cell's ability to synthesize DNA. If this treated cell undergoes the process of cell cycle, then the affected phase would be, as you know, in S phase, cell duplicates its chromosomes. As a result, each chromosome consists of 2 sister chromatids. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is S phase. The affected phase is S phase, means option A is the correct answer. The part of neuron which contains the major portion of cytoplasm is, given options में से जो correct answer है वो है option C, that is cell body, means option C, cell body is the correct answer. Cell body contains the major portion of cytoplasm. Next question, in the given vertical section diagram of the human eye, the part which causes refraction of light is labeled as you know, cornea admits light to the anterior of eye and bends light rays so that they can be brought to a focus. That's why option A is the correct answer. जो cornea को represent कर रहा है, means option A is the correct answer. Next question, diagrams 1 and 2 represent the conditions of pupil while 3 and 4 show the shape of eye lens. The diagram which show the condition of pupil and shape of eye lens when looking at the moon are, looking at the moon means when light intensity decreases or in dim light. तो जो correct condition of pupil है वो 1 है और जो करेक्ट शेप है लेंस का वो 3 है, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. As you know, after striking the cornea, light passes through the pupil. The size of pupil is adjusted by the muscles of iris. Pupil constricts in bright light when the circular muscle of iris contracted. Similarly, pupil dilates in dim light when the radial muscles of iris contract. तो हमें dim light में पहचाना है तो pupil क्या होगा, dilate होगा. That's why option A 1 and 3 is the correct answer. Next question, in human beings, deficiency of vitamin A causes night blindness. This is because vitamin A is required for the production of, given options में से जो correct answer है वो है option B, that is rhodopsin. Option B, rhodopsin is the correct answer. As you know, rods contain a pigment called rhodopsin. When light falls on rhodopsin, it breaks for generating a nerve impulse. In the absence of light, the breakdown products are again converted into
Rhodopsin. Body synthesizes rhodopsin from vitamin A, and that is why the deficiency of vitamin A causes poor night vision. That's why option B, rhodopsin, is the correct answer. Next question. What will be the pathway for a spinal reflex action when the hand of an individual is pricked by a needle? As you know, pain receptors in skin stimulates, a nerve impulse is generated which is carried by a sensory neurons to the interneurons of spinal cord. From interneurons the impulse is passed to motor neurons which carry it to the muscles of arm. As a result, the muscles contract to withdraw hand. During it, other interneurons transmit nerve impulse up to the brain so that the person become aware of pain and what happened. इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है पाथवे को. सेंसरी से इंटर, इंटर से मोटर, मीनवाइल इंटरन्यूरॉन ब्रेन को भी इम्पल्स सेंड कर रहा है. ऑप्शन बी में इनकरेक्ट पाथवे है सेंसरी न्यूरॉन का, ऑप्शन सी में भी, और ऑप्शन डी में हमें 2 वे नजर आ रहा है इसलिए इनकरेक्ट है. जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन इज. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next question. In the human body, the function of progesterone is to increase the. Given options में से जो correct answer है वो है option C. The function of progesterone is to increase the thickness of uterine wall during pregnancy. Means option C is the correct answer. Next question. The given symptoms are observed in a patient with overproduction of a hormone, shivering of hands, frequent sweating, increase in heartbeat, increase in energy production. The hormone identified is. Given options में से जो correct answer है वो है option B, that is thyroxine. Means option B, thyroxine, is the correct answer. Next question. After consuming a carbohydrate-rich meal by a non-diabetic person, the blood level of glucagon and insulin will. Glucagon level decrease करेगा, इंसुलिन का लेवल इंक्रीज करेगा. हमारे दोनों करेक्ट ऑप्शन ए में थे, दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर. दैट इज ग्लूकागॉन लेवल विल डिक्रीज, इंसुलिन लेवल विल इंक्रीज. Means option A is the correct answer. Next question. When Alim encounters a fright bull, he experiences a sudden increase in his heartbeat. This increase in the heartbeat would. Given options में से जो correct answer है वो है option D, that is increase the supply of oxygen to his muscles. Means option D is the correct answer. The drones of honeybee families are haploid because they are produced through the process of. Given options में से जो correct answer है वो है option D, that is parthenogenesis is the correct answer. As you know, parthenogenesis is also considered as a form of asexual reproduction. In it, an unfertilized egg develops into new offspring. Some fishes, frogs, and insects reproduce by means of parthenogenesis. Similarly, queen honeybee lays eggs in the cell of honeycomb. Many eggs remain unfertilized and developed into haploid males drawn by parthenogenesis. That's why जो correct answer है वो है option D, that is parthenogenesis. Next question. In a flower, the site where germination of pollen grains takes place is.
गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज स्टिग्मा. As you know, when pollen grains mature, they are transferred to stigma. It is called pollination. On reaching the stigma, the tube nucleus of pollen grain constructs a pollen tube. The pollen tube contains a tube nucleus and two sperms. The tube grows through style and ovary and enters ovule. That's why the correct answer is D, stigma. Next question. In pollination, pollens transfer from the label parts. When pollen grains mature, they are transferred to stigma from anther. 2 शो करा एंथर को और 1 शो करा स्टिग्मा को. मीन्स पोलन ट्रांसफर होंगे एंथर से स्टिग्मा तक, मीन्स 2 से 1 तक. दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 2 to 1. 4 और 3 बिल्कुल इनकरेक्ट थे. जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ type of asexual reproduction. 1. Parent cells are surrounded by cyst. It occurs mostly in unfavorable conditions. Nucleus and cytoplasm divide simultaneously. The characteristics of multiple fission is/are. जो करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 और 2 है. दैट्स वाई जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. Means option C is the correct answer. Next question. In contrast to spermatogenesis, oogenesis produces one mature gamete. Means option A is the correct answer. oogenesis में एक mature gamete बनता है जबकि spermatogenesis में 4. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a healthy male rabbit, the total number of sperms that are expected to be produced by 100 primary spermatocytes are. Each primary spermatocyte produce 4 sperms. That's why जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 400. 100 multiplied by 4 is equals to 400. Means option C is the correct answer. In the human body, the set of structures which is composed of cartilage is. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज एपिग्लोटिस, ट्रैकिया एंड नोज टिप. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, which represents the set of structures which is composed of cartilage. Next question. Suppose an athlete is diagnosed with a fracture in the sternum. The part of skeleton that would be affected in this case is the. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज रिब केज. मीन्स ऑप्शन बी, रिब केज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वर्किंग ऑफ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्केलेटन. द पेयर ऑफ जॉइंट्स दैट शोज दिस टाइप ऑफ वर्किंग इज. हमें क्या नजर आ रहा है? हिंज जॉइंट नजर आ रहा है. एज यू नो, हिंज जॉइंट्स मूव back and forth like the hinge on a door and allow movements in one plane only. The knee and elbow are hinge joints. That's why जो हमारा करेक्ट आंसर है गिवन ऑप्शंस में से वो है ऑप्शन बी, दैट इज elbow and knee. Means option B is the correct answer. Next question. The given diagram shows the anterior view of different bones of the human skeleton. The parts which form the knee joint are labeled as 4 and 1. That's why जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 4 and 1. Means option A is the correct answer. Next question. The MRI magnetic resonance imaging diagnostic report of a joint reveals the destruction of a cartilage. This condition is diagnosed as. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज osteoarthritis. As you know, osteoarthritis is due to degeneration in the cartilage present at joints or due to decreased lubricant
production at joints. That's why option D, osteoarthritis, is the correct answer. If a DNA segment contains 30 guanine and 60 thymine in a single strand, then the total number of nucleotides in this DNA segment will be, as you know, DNA is double helix. DNA में 2 स्ट्रैंड होती है. ग्वाइनिन हमेशा पेयर बनाता है साइटोसिन के साथ और थाइमिन एडेनिन के साथ. मीन्स 30 ग्वाइनिन है तो 30 साइटोसिन भी होंगे. 60 थाइमिन है तो 60 एडेनिन भी होंगे. 30 + 30 + 60 + 60 कितने होते हैं? 180. That's why correct answer is option D. Means D is the right answer. Next question. If the nucleotide order in DNA segment is GCC-ATA, then the total number of hydrogen bonds in this segment will be, as you know, there are 2 hydrogen bonds between adenine and thymine, while there are 3 hydrogen bonds between cytosine and guanine. ग्वाइनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन भी, तो मीन्स 3 + 3 + 3 9. एडेनिन कितने बनाता है? 2. तो 2 + 2 + 2 6. 9 + 6 = 15. तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज टोटल 15 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर अ ट्रेट इज क्रॉस्ड with an individual homozygous recessive for the same trait, then the phenotype of F1 generation will be. हमें कंडीशन गिवन है, हमें होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करवाना है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ. होमो जब भी आएगा तब दोनों अलील सेम होंगे. अगर डोमिनेंट है तो दोनों कैपिटल लेटर्स होंगे, अगर रिसेसिव है तो दोनों स्मॉल लेटर्स. जब हम होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो हमारे पास जो भी ऑफस्प्रिंग्स है वो क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है. दैट्स वाई जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 100% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ये कैपिटल आर यहाँ से, 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 ये स्मॉल आर यहाँ से, ये स्मॉल आर यहाँ से, ये स्मॉल आर यहाँ से और ये स्मॉल आर यहाँ से. होपफुली आपको पनेट स्क्वायर बनाना आता है. तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 100% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेड फ्लावर capital R color is completely dominant over white flower small r color in a particular plant. When a heterozygous red flower is crossed with a white flower, the probable percentage for the offspring flower color would be. हमें heterozygous red को क्रॉस करवाना है white flower के साथ. heterozygous मीन्स दोनों अलील डिफरेंट है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर. वाइट इज रिसेसिव तो दोनों स्मॉल लेटर्स यूज होंगे. जब हम इनको आपस में क्रॉस करवाते हैं, ये कैपिटल आर यहाँ से, ये कैपिटल आर यहाँ से, ये स्मॉल 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 आर यहाँ से, तो हमें क्या मिल रहे? हमें 2 रेड मिल रहे, 2 वाइट. मीन्स 50% रेड और 50% वाइट. दैट्स वाई जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. Next question. The given table shows the result obtained in an experiment of breeding cattle with unknown genotype for their coat color. Note, the allele for black hair coat color is completely dominant over the allele for red hair coat color, and these are represented as capital B and small b respectively. If the parental black cow from cross 3 is bred with the parental black bull from cross 2, then which of the following would be true for the genotypes of their offspring? फर्स्ट क्रॉस को मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, सेकंड क्रॉस को मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया और थर्ड क्रॉस को मैंने पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया. 50% ब्लैक हेयर कोट कलर और 50% रेड हेयर कोट कलर तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ब्लैक काउ जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, हेट्रोजाइगस ब्लैक हो.
तभी हमें 2 रेड और 2 ब्लैक मिलेंगे, मीन्स 50-50%। सेकेंड क्रॉस में हमें 75% ब्लैक हेयर कोट कलर मिल रहा है और 25% रेड हेयर कोट कलर मिल रहा है। वो तभी पॉसिबल है जब दोनों, जो ब्लैक काउ और ब्लैक बुल है, वो दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में। आपको पता है रिसेसिव ट्रेट तभी जाहिर होता है जब दोनों पेरेंट्स के पास रिसेसिव हो। क्रॉस 3 में हमें 100% ब्लैक हेयर कोट कलर मिला है, मीन्स जो पेरेंट काउ है वो होमोजाइगस है, डोमिनेंट है, मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, हमें काउ लेनी है ब्लैक, थर्ड क्रॉस की, जो क्या है कैपिटल बी, उसको हमें क्रॉस करवाना है ब्लैक बुल के साथ जो क्रॉस बी का है, मीन्स हमें कैपिटल बी को क्रॉस करवाना है कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ। तो ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, ये कैपिटल बी यहाँ से, ये कैपिटल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से। तो हमें क्या नजर आ रहा है, 2 ब्लैक होमोजाइगस ब्लैक है, मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट ब्लैक है, और 2 ब्लैक हेटेरोजाइगस ब्लैक है। तो हमें क्या नजर आ रहा है, 50% होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग है, 50% हेटेरोजाइगस है, जो हमें ऑप्शन सी रिप्रेजेंट करे। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज heterozygous offspring 50%, homozygous offspring 50%, means option C is the correct answer. Next question. The pedigree shows the inheritance of fur color in pure breeding rats. In the given pedigree, the total number of rats that are homozygous are, प्योर ब्रीडिंग रेट से मीन्स दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, मीन्स ये रेट और ये रेट क्या है, होमोजाइगस है। वाइट रिसेसिव है तो रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन होती है, मीन्स 1 2 3 तो हो ही है पॉसिबल। जब हम होमोजाइगस रेट्स को आपस में क्रॉस करवाते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव को, तो हमें हेटेरोजाइगस ब्लैक मिलते हैं सारे के सारे ऑफस्प्रिंग। जब हम उन रेट्स को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो हमें एक होमोजाइगस ब्लैक मिल रहा है, 2 हेटेरोजाइगस ब्लैक मिल रहे हैं और एक होमोजाइगस वाइट, मीन्स इन 3 में से कोई एक रेट ऐसा है जो होमोजाइगस है। तो टोटल कितने रेट्स हो गए, 1 2 3, और इनमें से कोई एक 4, मीन्स 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 4। दैट्स वाई जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4, मीन्स ऑप्शन बी 4 इज द करेक्ट आंसर। टोटल 4 रेट्स होमोजाइगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन. The option that correctly identifies the inheritance of the codominant trait from the parents to the offspring is, as you know, codominance is the situation where two different alleles of a gene pair express themselves completely instead of showing a dominant recessive relationship. As a result, the heterozygous organism shows a phenotype that is different from both homozygous parents. An example of codominance is the expression of human blood group AB. तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिसमें हमें नजर आ रहा है कोडोमिनेंट ट्रेट, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, क्योंकि हमें ब्लेंडिंग या इंटरमीडिएट फिनोटाइप नजर आ रहा है, जबकि ऑप्शन डी एग्जाम्पल है कंप्लीट डोमिनेंस की, क्योंकि हमें पेरेंटल फिनोटाइप नजर आ रहा है। हमें कोडोमिनेंट ट्रेट पे जाना था जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ मदर हैज AB ब्लड ग्रुप and the father has B blood group, then the type of blood group that the children will never have is, मदर का ब्लड ग्रुप AB है, फादर का ब्लड ग्रुप B है। अब दो पॉसिबल कंडीशन है, या तो B होमोजाइगस कंडीशन में हो या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अगर मैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्रॉस करवाती हूँ तो मेरे पास पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स है AB, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O पॉसिबल नहीं है। अगर मैं होमोजाइगस कंडीशन में B को क्रॉस करवाती हूँ तो भी मेरे पास दो पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप B। O दोनों ही कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज द चिल्ड्रन विल नेवर हैव
blood group O, means option A is the correct answer. Next question. In an experiment, healthy mice were exposed to some radiations. When they were allowed to mate, they produced offspring without tails. The reason for the lack of tail would be, गिवन ऑप्शंस में से जो बेस्ट करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज म्यूटेशन। हमने किन कीवर्ड्स को देख के पहचाना ए म्यूटेशन करेक्ट आंसर है? हेल्दी माइस वर एक्सपोज टू सम रेडिएशंस, इससे हमने पहचाना ए म्यूटेशन इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द गिवन फूड वेब, which of the following combinations is correct? Option A is correct answer, that is hawk secondary consumer, rabbit primary consumer है, हॉक सेकेंडरी कंज्यूमर है, इस फूड चेन से टर्जरी है, बट इस फूड चेन से सेकेंडरी है, दैट्स वाई ऑप्शन ए हॉक सेकेंडरी कंज्यूमर इज द करेक्ट आंसर। वेरस स्नेक यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी कंज्यूमर, इनकरेक्ट है, स्नेक सेकेंडरी कंज्यूमर है। ग्रास प्राइमरी कंज्यूमर हो ही नहीं सकती, ग्रास प्रोड्यूसर है। माउस सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं है, माउस यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट था, दैट इज हॉक सेकेंडरी कंज्यूमर इस फूड चेन के हिसाब से। द फंक्शन ऑफ फंजाई इन एन इकोसिस्टम इज टू, गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एज यू नो, decomposers or reducers break down the complex organic compounds of dead matter of plants and animals into simple compounds. They secrete digestive enzymes into dead and decaying plant and animal remains to digest the organic material. After digestion, decomposers absorb the products for their own use. The remaining substances are added to environment. Many types of bacteria and fungi are the principal decomposers of biosphere. That's why option B, return nutrients to the environment, is the correct answer. Next question. In the given food web, the living organism X could be R/N. X रैबिट को भी ईट कर रहा है और माउस को भी, मीन्स एक्स इज कार्निवोर। तो हमें गिवन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना था कौन कार्निवोर है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कैट। कैट इज द कार्निवोर। काउ, ज़ेब्रा, एलिफेंट क्या है? हर्बीवोर है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इन कमर्शियलिज्म? As you know, commercialism is a type of symbiosis in which one partner is benefited while the other is neither benefited nor harmed. That's why given options में से जो correct answer है वो है option C, that is one species benefits while the other remains unaffected. Means option C is the correct answer. Next question, the process which makes the use of carbon dioxide present in air is the, गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। एज यू नो, इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर एज ऑप्शन ए, सी और डी में कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होती है, रिलीज होती है, दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स ऑन लैंड, assimilation of nutrients in animals, breakdown of organic matter by decomposers. इन तीनों प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल विच कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स इज, as you know, conversion of nitrogen gas into nitrates is called nitrogen fixation. That's why given options में से जो correct answer है वो है option D, that is nitrogen fixation. Means option D is the correct answer. Next question, in the environmental management, the given logos represents, logo 1 represent कर रहा है recycle को,
लोगो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है डिड्यूस को, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो दोनों करेक्ट ऑप्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज लोगो 1 इज रिसाइकल, लोगो 2 इज रिड्यूस्ड, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Alternate to practical ATP. The given pictomicrograph depicts one of the phases of the cell cycle. This phase takes place at the labeled part. Number of chromosomes given है, phases of cell cycle given है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को, माइटोटिक फेज को, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है G1 फेज को, इंटरफेज। ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है एस फेज को, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है G2 फेज को। ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन माइटोटिक फेज को। ऑप्शन डी रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोकाइनेसिस को। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि हमें डिवीजन आइडेंटिफाई करनी थी। Next question. The given pictomicrograph depicts one of the phases of mitosis. If the chromosome number is X in this phase of mitosis, then the number of chromosomes in the daughter nuclei after the telophase would be. Given options में से जो correct answer है वो है option A, X. As you know, mitosis is the type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosomes as were present in parent cell. Parent cell में भी X होंगे और daughter cell में भी X होंगे. That's why option A is the correct answer. Next question. The given image represents a model of the human ear. Which of the label part would be affected if a patient has an infection in the middle ear? ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है मिडल ईयर को, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल ईयर को, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रिप्रेजेंट करे इनर ईयर को, और हमें क्या पहचानना था, मिडल ईयर का पार्ट, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर द ब्रेन इंजरी in an accident, a person is unable to maintain and coordinate motor functions. The part of the brain that has been affected in this case is labeled as. Given options में से जो correct answer है वो है option B, that is cerebellum. Means option B, cerebellum is the correct answer. Next question. The given images represent different pieces of potato tubers. The piece that which would not be able to produce a stem is. Given options में से जो correct answer है वो है option C. क्यों? क्योंकि हमें option C में कोई भी scar नज़र नहीं आ रहा, जबकि option A में, option B में और option D में हमें scar नज़र आ रहे. That's why correct answer is option C, which would not be able to produce a stem. Next question. The given diagram represents longitudinal section of a maize seed. The label part Q is. Given options में से जो correct answer है वो है option D, that is endosperm. The label part Q is endosperm, means option D is the correct answer. Next question. The given diagram shows an experiment to study the conditions necessary for the germination of seeds. The seeds in test tube 1 would germinate while there would be no germination in test tube 2. टेस्ट ट्यूब 1 में सीड जर्मिनेट करेंगे, जबकि टेस्ट ट्यूब 2 में सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे. इन द टेस्ट ट्यूब 2 द सीड्स विल नॉट जर्मिनेट बिकॉज ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन वाटर. करेक्ट. 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज inappropriate for seed germination. Correct. Cotton absorb the required amount of water for germination. Incorrect है, क्योंकि cotton दोनों में present है. That's why option C is the correct answer. जो दोनों correct statement को show कर रहा है, that is 1 and 2. That's why
in the test tube 2, seeds will not germinate. Next question. In the given image of the human skeleton, patella is labeled as गिवन ऑप्शंस ए बी सी डी में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी रिप्रेजेंट करे पटेला को. दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sana obtained the following data related to the height centimeter of her class fellows. The correct graphical representation of this data is, जो हमारा गिवन ऑप्शन ए बी सी डी में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए. ए इज द करेक्ट आंसर. हम इसको चेक कर लेते हैं. 150.5 से लेके 160.5 तक हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए? 5. जो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ए और ग्राफ सी रिप्रेजेंट करें. ग्राफ बी में 7 है और ग्राफ डी में 3. तो मीन्स बी और डी तो इनकरेक्ट है. 160.5 से लेके 170.5 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद 3 होनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ए करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है. ग्राफ सी में 7 है, तो मीन्स सी भी इनकरेक्ट है. 170.5 से लेकर 180.5 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद 7 होनी चाहिए, जो भी ग्राफ ए बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है. 180.5 से लेके 190.5 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद 4 होनी चाहिए, जो ऑप्शन ए करेक्टली रिप्रेजेंट करे 4. तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. मीन्स ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन डेटा रिप्रेजेंट्स द हाइट in centimeter of grade 10 students. The height range which contains the highest number of students is 100.5 से लेकर 130.5 में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. 130.5 से लेकर 160.5 तक हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 160.5 से लेकर 190.5 तक हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद 4 है. 1 2 3 4. 190.5 से लेकर 220.5 तक हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद 5 है. 1 2 3 4 5. तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस रेंज में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में. दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज द हाइएस्ट रेंज इज 130.5 till 160.5. मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.